Don't forget to like, subscribe, share, comment my YouTube channel. So guys, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना आसान है, और जितना आसान है लोग उसको उतना ही मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। पूरे स्टेप्स, पूरा तरीका होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और क्लास 9 साइंस 2.4 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2. So let's solve the question. Show that x power a by x power b, x plus b into x power b by x power c, b plus c plus xc over xa, c plus a equals to 1. What we will do? X a minus b and a plus b, then x b minus c into b plus c, x c minus a, c plus a equals to 1. Now what we will do? Write here a minus b, a plus, then x b minus c, b plus c. Then you write here x c minus a by c plus a equals to 1. Now you write all these factors on one power like this. A minus, either you can a minus b, a plus b, all these a square. So you write the formula a square minus b square over here. Then x b square minus c square. Then x c square minus a square equals to 1. Now what you will do? You write all these on one base. X a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square equals to 1. So all this cancel, a square minus a square cancel, b square plus b square cancel, minus c square cancel. So x is equals to 0 is equals to 1 and x 0 is equals to 1 equals to 1. So left hand side equals to right hand side. So don't forget to like, subscribe, share, comment my YouTube channel to get new and innovative content about maths.